Good evening, students. Am I audible and visible? Very good evening, dear students. Am I audible and visible? All clear? Very good, very good. Welcome back to PW platform GATE crash course in the subject of algorithms. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन ऑन मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ एल्गोरिथम्स. Something is going on. So my birthday today. Okay, Shifu Khadir, birthday, happy birthday to you. Happy returns of the day and evening. So all clear from my side. So begin our discussion with graph techniques. It's an overlapping topic. You basically study about graphs in the subject of data structures and also graph theory in the subject of discrete mathematics. तो अब हम ये देखेंगे कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एल्गोरिथम्स क्या हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ थियरी के बारे में. ठीक है, तो द एजेंडा वुड बी समथिंग लाइक दिस. शायद आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बात किया होगा. जस्ट एक समराइजिंगली मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, फिर उसके बाद मेरा मेन फोकस होगा ग्राफ ट्रैवर्सल्स पर, ग्राफ टेक्निक्स. ट्रैवर्सल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर और एंड इंपॉर्टेंट ग्राफ ट्रैवर्सल्स आप एक डेटा स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से अलग है और एल्गोरिथमिक फ्रेमवर्क में हम एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे. एंड इफ टाइम परमिट्स विल आल्सो टच अपॉन what we call an application of graph traversal, especially depth first search, जो है components, जहाँ पर 3 types of components की बात करते हैं हम. Like, yeah, Bhagwa, good evening, and good evening once again to all of you. Welcome to the platform PW. ठीक है, so I was saying that one of the important applications of graph traversals is components. There are 3 types of components, आपको पता है, namely connected components, strongly connected components, bi-connected components. और ये तीनों के बारे में काफ़ी questions previous years में आ चुके हैं. And I don't know whether when you studied about graph theory or discrete mathematics, whether you studied about components or not, because these are all overlapping topics. So some aspects you study in algorithms and some aspect you study in discrete maths graph theory. चलिए कोई बात नहीं, we will try to touch upon to maximum possible extent. तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा टू बिगिन आवर डिस्कशन विथ, आई डोंट हैव टू टेल यू बट जस्ट टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटी, वी डिफाइन ग्राफ बाय मीन्स ऑफ ए सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एडजेस. वी जनरली फॉलो द कन्वेंशन दैट नंबर ऑफ वर्टिसेस वी राइट mod v and number of edges we write mod e. We believe there are n vertices and e edges. The graph may be a directed graph or undirected graph. The graph may be a weighted graph or unweighted graph. So that is not basically a sort of relevance to us. Essentially, as a programmer or as a developer, software developer, what you have to focus on is the representations of graph. And I'm very sure all of you present here all well familiar. Just for my satisfaction, मेरे अपने satisfaction के लिए, क्या आप लिख के बताओगे मुझे what are the 2 representations of the graph? Just for my satisfaction, even though I'm very strongly, convictingly believing that you know it, definitely, convincingly believing that you know the representations. Just for satisfaction of my myself, can you write what are the representations of graphs? Yes, there are 2 representations. One is sequential representation and the other is linked representation. Sequential and linked. The sequential representation is called adjacency matrix. Adjacency matrix. And the linked representation is called adjacency list. Will you tell me what is the size of the matrix? Generally, matrix का size क्या होगा? Yeah. What will be the size of the matrix? The size of the matrix is n cross n, right?
Generally, if you call the matrix as A, so this is an n cross n matrix. What is n? N is the number of vertices, right? What does the entry aij indicate? Adjacency. अगर फर्ज करिए मान लीजिए कि अगर ग्राफ इज नॉट ए वेटेड ग्राफ अगर ना हो, then basically this can bear the value of either 0 or 1. If there is no edge between I and j, then aij will be 0, and if there is an edge between I and j, then aij will be 1. You know this process. हाँ, अगर मान लीजिए कि ग्राफ इज ए कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर हो, ग्राफ अगर वेटेड ग्राफ हो, तो हम इसे बोलेंगे कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स. तो तब क्या होगी, aij की वैल्यू एड्ज कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ द एड्ज होगी. ये हमने ऑलरेडी मल्टी स्टेज ग्राफ और दूसरे प्रॉब्लम्स में देखा था, cost adjacency matrix. So in case if the graph is unweighted graph, then the entries of the matrix will be 0, 1. और अगर weighted graph हो, then the entry of the matrix will bear the weight of the edge present between vertex I and j. तो ये हो गई adjacency matrix. ये basis पर हम generally बोलेंगे कि if you are representing the graph, listen to me, if you are solving some graph problem and the graph is represented in adjacency matrix, then the time complexity of that algorithm or that problem will never be less than order of dash. If you are manipulating the matrix, if you are representing the graph of your problem in the form of a matrix, then the time complexity of such algorithm, of such problem will never be less than order of dash. You know it. It will be order of n square, because the size of the matrix is n square. Accordingly, the time complexity generally of such problems representing their graph in the form of adjacency matrix, their time complexity will never be less than order of n square. Order of n square. अब आ जाइए बात adjacency list की. This is a linked representation. List representation is a linked representation. इसके लिए आप एक simple graph भी example ले सकते हो, so that you can have understanding. You can name the vertices as 1, 2, 3, 4. You can put some connectivity, something like this. Then how is it represented in the form of a matrix? It basically it is like what you say an array of linked list. अगर आप data structure concepts में पूछेंगे, then this is like array of linked list, where each array element correspond to one node, right? One node. So there are 4 nodes. So I take an array with 4 elements like this. You can call this as some A, right? This is entry for row A, row 1, row 2, row 3, row 4. So what will entry for row A or row 1 contain? It is going to contain a linked list, right? Representing the nodes which are adjacent from 1. It is going to be a linked list. ये linked list होगी. जहाँ nodes of the linked list जो होंगे, वो will be the nodes which are adjacent from 1. जैसे आप ग्राफ में देखेंगे, from 1 we have adjacency to 2, to 4, to 3. So therefore I will have 3 nodes, one pointing to 2, another pointing to 3, another pointing to 4. यहाँ पर एक small confusion है. So when I have a link, my dear students, please resolve this confusion. When I have a link from 2 to 3, when I have a link from 2 to 3, does not mean that there is an edge from 2 to 3. Does not mean there is an edge from 2 to 3. ये adjacency का मतलब ये है, there is a link from 1 to 2, there is a link from 1 to 3, ठीक है, and there is a link from 1 to 4. ये मतलब है, there is an edge from 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. This is the meaning of adjacency list. ठीक है. फिर उसके बाद आप आइए वर्टेक्स 2. वर्टेक्स 2 is adjacent to vertex 1 and 4. तो यहाँ पर 2 नोड्स लेंगे हम, right? One adjacent to 1, another adjacent to 4. ठीक है. This is adjacency list. फिर उसके बाद आ जाइए आप वर्टेक्स 3. We have adjacency to 1 and 4, so therefore 1 and 4. फिर लास्ट में होगा 4. 4 is adjacent to 1, 2, 3, so I will have 3 nodes. This will be the real adjacency list of this graph, maybe undirected graph. So what is the size of this list? Come on, tell me, what is the size of this list? The graph has 4 vertices and how many edges? 1, 2, 3, 4, 5 edges. So therefore, what is the size of this list? Come on, write down. What is the size of this list? The graph has n vertices and 5 edges. So based on that, in terms of n and e, मुझे बताइए what is the size of this list. Pratyam B. Nayak, be careful. I want the exact value, please. I want exact value. What is the size of this list?
It is not n plus c. If you take the order of that, it is order of n plus c. But I want the exact value. मैं यहाँ पर ये करना चाह रहा हूँ मैं. The value of e is 5. Is it not? Is the value of e 5 here? But how many nodes do I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nodes I have. Yes, Rahatul Ansari. That's right. It is n plus 2e. N plus 2e. If the graph is undirected, UD, undirected, the size of the adjacency list will be n plus 2e. हाँ, इसका आप अगर आप order ले लेंगे, then that will be order of n plus e. Order of n plus e. लेकिन exact value अगर मैं पूछूं, तो then you have to write it appropriately as n plus 2e. Am I right? हाँ, अगर graph directed graph हो, then you will write order, the exact size of the list will be n plus e. तो इसका मतलब ये है, please remember के whenever you are representing the graph through adjacency list, ठीक है, through adjacency list, then the time complexity of such algorithm will be linear order of n plus e. Will be linear order of n plus e, whether the graph is directed or graph is undirected, order of n plus e. तो अब यहाँ पर एक confusion ये होता है कि which is better. चलिए मुझे लिख के बताइए, let me check your understanding. Which representation is better? Is adjacency matrix superior or adjacency list superior? Order of n square or order of n plus e, which is better? आप बोलेंगे n plus e is linear and order of n square is quadratic. So therefore definitely n plus e is better, you can say. Lekin it will depend on what? It will depend on, come on, Satyam Binayak, please tell me. Which representation is better? Order of, seemingly looks like order of n plus e is better than n square. Lekin it depends on the graph. Yes, logical learner, you are right. बताइए अब, what type of graph? For what type of graph will you prefer adjacency list? And for what type of graph will you prefer adjacency matrix? A very important point. Logical learner, you have rightly said it depends on the graph. You have rightly said it depends on the graph. So please tell me, how does it depend on? I will write it on the next page. Next page I will write. You are saying it depends on the graph. You are rightly very correct, but how? What type of graph, which representation is preferred is very important for software developers and programmers. Yes. You should not say sparse matrix. You should say, if the graph is complete, please follow me. The graph is complete, or you can say dense graph. If the graph is complete or dense graph, which representation is suitable? Come on, tell me. This could be a simple 1-mark question. If the graph is complete or dense graph, yes, then which matrix or which approach is better? Bhagwa, you are right. Matrix is better. Because the size of the matrix will be n square, very correct. But however, what will be the size of adjacency list, exactly speaking, adjacency list, when the graph is complete or dense? Come on. What will be the size of the adjacency list when the graph is complete or dense? I hope you know, I am believing that you know the meaning of complete and you know the meaning of dense. मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है what is a complete graph and what is a dense graph. आपने discrete mathematics graph theory में पढ़ा होगा. With that assumption I am continuing. Adjacency list की exact size क्या होगी? Can anybody write down the equation and tell me? देखिए आप, ट्रेडिशनल साइज ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट इज n plus e. अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहोगे पूरा इन टर्म्स ऑफ n, इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर n, सो दैट यू कैन मेक ए रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन n स्क्वायर एंड n plus e, तो आपको एक्सप्रेस करना होगा e इन टर्म्स ऑफ n. So what is e in terms of n? How is e related in terms of n? That I am asking you. Come on. For a complete graph, every vertex will be adjacent to every other vertex. So if there are, that means vertex 1 will be adjacent to n minus 1 vertices. Vertex 2 will be adjacent to n minus 1 vertices. Vertex 3 will be adjacent to n minus 1 vertices. इसका मतलब ये है, इसका sir, complete and dense is same. Yes. No, dense is like almost complete, you can say. Dense का मतलब ये है कि almost connectivity है. That is the meaning of. They are not exactly same. Complete का ये मतलब है कि every vertex is connected to every other vertex. Dense में हो सकता है कुछ vertices छूट जाएं, कुछ adjust बाकी रह जाएं. ये मतलब है dense का. ठीक है? Okay. So what will be the value of e? I mean, you can put it like n into n minus 1 by 2 in case if the graph is a undirected graph, and if the graph is directed graph, you can take it like n into n minus 1.
For directed graph, it will be n into n minus 1. For undirected graph, you can take it like n into n minus 1 by 2. Is it not? Right? So this will be the value of E. This will be the value of E. And for both these cases, you can take it like n square. So therefore, the size of adjacency list for complete graph will become n plus order of n square. तो ये देखिए आपको ये additional overhead हो गया adjacency list में than in comparison to matrix. So that is why we say that if the graph is complete, please remember this as a universal point, as a lifetime concept. Generally I say every subject में मैं बोलता हूँ कि कुछ concepts ऐसे होते हैं जो lifetime है. So this is a lifetime concept. That if the graph is complete or dense, right, matrix representation is suitable or better, efficient, because its size is order of n square. Whereas adjacency list की size भी order of n square होगी, लेकिन उसकी size बढ़ जाएगी, देखिए आप, n plus n square. So therefore we prefer adjacency matrix. And when the graph is not complete, if the graph is sparse graph, हम जो बोलेंगे sparse, opposite of dense, sparse graph, then definitely adjacency list become linear. Adjacency list की जो size होगी order of n plus e, this will be superior. ये एक important point है as a programmer, as a developer, remember करने के लिए, और even from gate exam perspective problem solving के लिए ये एक बहुत important conclusion है. If the graph is complete or dense, go for matrix. Size will be order of n square. Adjacency list का size बन जाएगा n plus n square. ठीक है? And then if the graph is sparse graph, not a complete graph, sparse graph, then adjacency list is better because its time complexity will be order of n plus e, और दूसरा adjacency matrix का हो जाएगा order of n square. ये है regarding representations of graphs. अब next अब आते हैं हम one of the important operations on graph traversals, जिसे हम बोलेंगे techniques. चलिए, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, लेके देखेंगे आपका बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी. व्हाट इज ट्रैवर्सल? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रैवर्सल? कैन यू जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो हाउ डू यू फॉर्मली डिफाइन ए ट्रैवर्सल? कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट. व्हाट इज ए ट्रैवर्सल? व्हाट इज ए ट्रैवर्सल? डिफाइन इन योर ओन टर्म्स. देखिए, आपको डेफिनेशंस आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही नहीं है कि आप जस्ट एग्जाम लिख लो और पास कर लो और बेसिकली लाइक एडमिशन ले लो. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर, जो आप चाह रहे हो सॉफ्टवेयर फर्म में जाना या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप वर्क करना चाह रहे हो, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आर टू इम्पॉर्टेंट. ये बहुत ज़रूरी है. योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इज प्राइमरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत जरूरी है, आपको मैं बार बार कह रहा हूं. तो when I say you have to define means you have to basically put a very nice definition. Bhagwa is saying going through each element. Again, a very short definition. I want a very elaborate definition. What is traversal? Come on. There are some interesting aspects which I will touch upon here. Traversal का मतलब क्या है? Path और route, okay? देखिए अब मेरा definition मैं कैसे define कर रहा हूं. Visiting the nodes of the tree or graph in a particular order and processing the information only once is traversal. ये है formal definition. Visiting the nodes of the tree or graph in a particular order, जो एक order है आपको traversal के basis पर, and processing that, second point is important, processing the information of it is done only once. इसका मतलब यह है कि आप visit करेंगे nodes में भी multiple times, लेकिन process करेंगे information node का only once. This traversal. और आपने जरूर पढ़ा होगा ट्री ट्रैवर्सल्स और ग्राफ ट्रैवर्सल्स. सो हियर आई हैव वन बेसिक सिंपल क्वेश्चन. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ ट्रैवर्सल? पहले तो आपको पता है ट्री ट्रैवर्सल्स है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, एंड देन यू हैव लेवल ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर्स एक्सेट्रा. हम तीन बड़े ट्रैवर्सल्स ले लेंगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल्स. और उसी तरह ग्राफ ट्रैवर्सल्स है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. अब मुझे बताइए, आपके जो प्रीवियस नॉलेज है विथ रिगार्ड टू डेटा स्ट्रक्चर्स और विथ रिगार्ड टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और शायद आपने एल्गोरिथम भी पढ़ा हो पहले कहीं, तो बेस्ड ऑन दैट आई एम फंडामेंटली आस्किंग यू, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द
फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ट्री ट्रैवर्सल एंड ग्राफ ट्रैवर्सल। और मैं ये भी कहूंगा कि नॉन ट्रिवियल डिफरेंस, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि ट्रिवियल डिफरेंस क्या है। कम ऑन, व्हाट इज अ नॉन ट्रिवियल डिफरेंस? नॉन ट्रिवियल का मतलब इंपॉर्टेंट, ट्रिवियल का मतलब अनइंपॉर्टेंट। Okay, logical learner is saying tree traversal always be acyclic, but graph can be cyclic. No, ये वो तो tree और graph का difference हो गया ना। Tree is acyclic, graph may be cyclic. No, it is not like that. भगवान, no. Tree traverse always acyclic. No. देखिए, आप tree का definition बोल रहे हो, मैं tree का definition नहीं पूछ रहा हूं, मैं tree traversal और graph traversal का difference पूछ रहा हूं। What is the difference between tree traversal and graph traversal? I'm not asking you the difference between tree and graph. वो तो पता है, cyclic. Graph traversal generates tree. अच्छा, ठीक है, need not be always Satyam Vinayak. If you say that Satyam Vinayak, the graph traversal generates a tree, then what does tree traversal generate? Come on. That's an interesting question. What is the difference between tree traversal and graph traversal? अब यहां पर आप ये नहीं कहोगे कि सर ट्री ट्रैवर्सल इज परफॉर्म्ड ऑन ट्रीज एंड ग्राफ ट्रैवर्सल्स आर परफॉर्म्ड ऑन ग्राफ्स। ये डिफरेंस इज ट्रिवियल डिफरेंस। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं फंक्शनैलिटी वाइज व्हाट इज, देयर इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच आई नो दैट यू नो इट, बट यू डोंट नो दैट इज द डेफिनेशन। Logical learner, tree traversal will be connected while graph can be connected. No, disconnected. No. Okay, Rahatul Ansari, you are right. Tree traversal starts from root. ठीक है? Tree traversal starts from root. Then where does graph traversal start from? No. Tree traversal starts from root. Agreed. ठीक है? Graph traversal कहां से start होगा? ये बेसिस पर हम डिफरेंस पे आएंगे। कम ऑन, यू आर कमिंग टू द पॉइंट। चलिए, अब आप बताइए ग्राफ ट्रैवर्सल कहां से स्टार्ट होगा? कम ऑन, एनी नोड। अब ये बेसिस पर आप डिफरेंस बोलिए क्या है। नाउ यू कैन गेट इट, आई एम वेरी श्योर। लॉजिकल लर्नर, यू आर राइट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनी नोड ना, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो वो बेसिस पर आप डिफरेंस क्या होगा? नो, डिफरेंस इज, आई डोंट वांट टू waste more time, I will directly tell you. Please remember and conceptualize that tree traversal is always unique. Graph traversal is not unique. It is a fundamental difference. Right? Unique का मतलब सिर्फ एक. When I perform a pre-order on a tree, there is only one pre-order. Right? That's why when it starts only from root, I have only one traversal. जब कोई भी आपको ट्री दी जाएगी, अगर आप उसका प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर करोगे, तो आई विल हैव ओनली वन ट्रैवर्सल, दैट्स इट। वन प्री ऑर्डर, वन पोस्ट ऑर्डर, वन इन ऑर्डर। सही है बात? लेकिन ग्राफ ट्रैवर्सल आप अगर पता हो आपको ऑलरेडी ग्राफ ट्रैवर्सल, तो आई एम वेरी श्योर यू नो दैट कैन आई हैव मल्टीपल डेप्थ फर्स्ट सर्च, मल्टीपल ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल्स ऑन ए गिवन ग्राफ? कम ऑन, से यस और नो? यस. So that is the difference. Remember, tree traversal is always unique. Graph traversal may not be unique. I can have multiple graph traversals for a given graph simply because, as you said, graph traversal can begin from any vertex. That's why I can have multiple depth first search, multiple breadth first search for a given graph. ये है difference. चलिए, अब start करेंगे हम graph traversals on different cases. First case, I will start with depth first search. Depth first search. Generally we write in short DFS, right? लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्मॉल फ्रेमवर्क है जो मैं चाह रहा हूं कि आप वो फॉलो करो फ्रेमवर्क, सो दैट सम प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम इजी फॉर यू, पर्टिकुलरली जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं गेट में, वो प्रॉब्लम्स आपको इजीली आप सॉल्व करोगे इफ यू फॉलो दिस फ्रेमवर्क फॉर माय एनालिसिस. पॉइंट नंबर 1 which I would like to tell you is status of a node during traversal. Status of a node during traversal, particularly depth first search. जब जो नोड पे आप प्रोसेस करोगे उसका एक स्टेटस होगा ड्यूरिंग ट्रैवर्सल. वो कौन से स्टेटस है, क्या आप लिख के बताएंगे मुझे?
what are the different status of a node during the traversal of graph, particularly depth first search, because depth first search is a very universal graph traversal. Come on, general graph traversal, I would say. Most often we use depth first search. Visited or not visited? नहीं, वो नहीं है. I will tell you here. Maybe you are not knowing it. One is called enode. The other is called live node. And the third is called dead node. The third is called dead node. A node during traversal can be either enode or live node or dead node. जो आप बाद में बोलेंगे visited or not visited. लेकिन ये अगर आप ये पैराडाइम से फॉलो करेंगे so then you can solve some typical questions very smoothly. Enode is a node which is currently being explored. Currently, E stands for exploring. Currently being explored. जो node आप presently explore कर रहे हो, जो जिसके children आप generate कर रहे हो, हम उसे बोलेंगे enode. और during traversal I can have only one enode. I can't have multiple enodes. Live node का मतलब ये है node all of whose children has not been generated. All of whose children has not been generated. मतलब वो processing तो शुरू किए हैं आप, लेकिन you have not finished the processing of all its children. वो nodes को हम बोलेंगे live node, and there can be many live nodes during traversal. There can be many live nodes during traversal. Third है dead node, node which is fully explored. मतलब जिसके पूरे चिल्ड्रन जनरेट हो चुके हैं, such node become what is called dead node. Such node become dead node. अब यहां पर एक सिंपल 1 mark क्वेश्चन पूछ रहा हूं. Let me see how many of you are knowledgeable and can tell me that. I said during traversal I can have only one enode, and during traversal I can have many dead nodes, so I don't have to really care or bother about dead node. लेकिन मुझे वरी करना है only about live nodes. Live nodes कई हो सकते हैं during traversal of depth first search और breadth first search. तो यहां पर आप मुझे बताइए, फॉर एवरी ट्रैवर्सल देयरफॉर नीड्स अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द लाइव नोड्स. आप बताइए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करेगा टू स्टोर इट्स लाइव नोड्स, टू स्टोर ऑल इट्स नोड्स विच हैज नॉट बीन फुल्ली प्रोसेस्ड, विच हैज नॉट बीन फुल्ली एक्सप्लोर्ड. विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू स्टोर द लाइव नोड्स इन डेप्थ फर्स्ट सर्च? कम ऑन, 1 mark question. Yes, the reason for that is that stack. So stack is essentially used to store live nodes. स्टैक में आप लाइव नोड स्टोर करोगे, स्टैक में स्टोर करोगे लाइव नोड्स. भाई डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉलो ए पैराडाइम ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट. इस प्रोसेसिंग ऑर्डर में आप नोड्स को प्रोसेस करोगे, सो दैट देयरफॉर दैट इज स्टैक, राइट. सो डेप्थ फर्स्ट सर्च इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक. आपने पढ़ा होगा. व्हाई? बिकॉज इट हैज टू स्टोर ऑल द लाइव नोड्स फॉलोइंग लास्ट इन फर्स्ट आउट पैराडाइम. ये फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है. अब चलिए दूसरे फ्रेमवर्क पे आएंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च के. वो है टाइमिंग वैल्यूज. Timing values associated with nodes during traversal. During traversal, every node during traversal will be associated. Let's say I have a node X. Every node during traversal will be associated with two timing values, one called discovery time D and the other is called finishing time F. Discovering time D. Yes. See, dead nodes are never stored on stack. Dead nodes are never stored on stack. Be clear. Enode is never stored on stack. Enode is currently under exploration. Right? जो visit हो रही है आपकी node वो enode है. जो process हो रही है node वो enode है. जो node पूरे जिसके children generate नहीं हुए हैं वो live node. मैं भी example से आपको clarity दूंगा. Example से clarity देंगे. Please follow me. उससे पहले ये भी एक framework follow कर लीजिए please. Generally, I'm telling you, this will not be taught in data structures. This is part of algorithm. That's why I'm telling you, follow carefully. Discovery and finishing time. So D is discovery time. D is called discovery time. And F is called finishing time. What is discovery time? Discovery time is the time at which the node is visited for the first time. The time at which the node is visited for the first time is discovery time. Time always starts from 0 at regular intervals in units of integers. Time starts at 0. But the time at which the node is visited for the first time, that is called discovery time.
अब वो बेसिस पर आप मुझे बताइए व्हाट इज फिनिशिंग टाइम. कम ऑन, मुझे लिख के बताइए चैट बॉक्स में व्हाट इज फिनिशिंग टाइम. इफ टाइम एट विच द नोड इज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज डिस्कवरी, तो फिनिशिंग टाइम का कॉन्सेप्ट और फिनिशिंग टाइम का डेफिनेशन क्या होगा? फर्स्ट विजिट इज डिस्कवरी, करेक्ट, नॉट लास्ट विजिट. In terms of our notation, like what is finishing time? Finishing time is the time at which the node become dead. Remember that. When the node become dead, then that is called finishing time. And remember, finishing time and discovery time both are integer values. I will tell you how to determine this. कैसे करेंगे हम? I will tell you by taking a suitable example. So that's what I'm saying. What you might have learnt in data structures is slightly different from what I'm explaining here. So please follow. और मैं बताते चलूँ आपको पहले के गेट एग्जाम में प्रीवाइज क्यू में, right? PYQ में there were questions asked based on discovery and finishing time. So please follow carefully, and if possible I will solve that question here. When the live node gets popped from the stack, that is not any time. The node at which time the node become the E-node for the first time, that is called discovery time. When you are popping the node from the stack, there is no time concept like that. तो सबसे पहले जो मैं ट्रैवर्सल ले रहा हूं, प्लीज ऑब्जर्व, डेप्थ फर्स्ट सर्च इन undirected connected graph. I don't have to tell you when the graph is connected. Everybody is knowledgeable, I suppose. तो मैं डायरेक्टली एक एग्जाम्पल ले लूंगा ग्राफ का. Undirected connected graph, something like this. This is my graph. This is undirected connected graph. We want to perform depth first search on this. So please see on board how we are traversing. As I mentioned just now, कि हम traversal कहीं से भी start कर सकते हैं. We can start the traversal from any node. Let us say, please follow me, I am starting from node A. Right? So this is my first visit to node A. So I can take any integer value greater than 0. Boys and girls, please listen to me. I can take any integer value greater than 0 as discovery time of this node. So let's say I'm starting the counter from 1. So 1, discovery time 1. अब हम क्या करेंगे? This is the first time we are visiting the node. We will process its information, say A. उसके बाद क्या करेंगे depth first search में? We generate any one child of it. How many children the node A has? 2 children, B and C. So I can generate any child. Of A in any order, either B first or C first. So let's say we generate B first. So what happens? This is my current E node in terms of the ideology. This is my current E node. So we are processing its information A and generate the first child. When we generate the first child, node B has not been visited earlier. So therefore we visit it, and then eventually node A becomes live node, and therefore we'll push A onto the stack. हम A को पुश कर देंगे स्टैक पर. क्यों? क्योंकि the moment in depth first search what happens? The moment any child has been generated and if that child has not been visited earlier, मतलब वो child पहले visit ना की हो, तो immediately the generated child will become next E node and making its parent live. ये concept ideology. Again I repeat, whenever in depth first search a node is generated, and if that node has not been generated earlier, has not been processed earlier, has not been visited earlier, then that generated node will become next E node, making its parent live. और live node हमेशा stack पे push कर देंगे आप. Live node हमेशा stack पे push कर देंगे. ठीक है? So what happens now? I will rub this dot now. This dot is basically indicating E node. So therefore node B becomes E node. A is pushed onto the stack. Discovery time of B you can mark it as 2. This is the first time we are visiting. So discovery time is 2. So node B has not been processed, we process the information. And then we follow the same paradigm. As per the graph, B has got 2 children, D and E. Right, I can generate any one of them. Let us say I generate D. D has not been visited earlier. So immediately D will become the next exploring node. And then C will become the next exploring node. And B will become live node. B gets pushed onto the stack. Please observe the stack, how is it growing? And that's how we follow last in first out paradigm.
D is my current exploring node, mark its discovery time. Any value greater than 2 can be marked as discovery time. Any value greater than 2. 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है. Any value greater than 2 will be marked as discovery time of of D. So D, we are processing it. We are processing D, right? So D is my current D node, right? And then D, as per the graph, has got one child, namely H. So therefore, it will generate H. H has not been visited earlier, so I visit H by making it as the next exploring node, pushing D onto the stack. Look at the stack, how it is growing, A, B, D, A, B, D, right? H is processed. यहाँ पर generally students confuse हो जाते हैं. H is current T node. As per the graph, H has been generated from D. तो मतलब H के children कौन हुए? H के children हुए E, F and G. Don't think that E, F and G are the parent of H. No, E, F and G are the children of H. तो हम कोई भी order में node को generate कर सकते हैं. So this is the discovery time of H, 4. Then I take on, I generate, for example, G. So this become my next exploring node. Mark the discovery time, let us say in sequence 5. In sequence 5, push H onto the stack. Push H onto the stack. Okay? So this is my paradigm. So process G, right? And remove the dots. So my current T node is G. As per the graph, G is generated from H. So the only child of G is C. The only child of G is C. So therefore, we are going to generate C from G. From G. This is 6th, right? And this is my current exploring node. So G becomes the live node. G becomes the live node. G becomes the live node and get pushed onto the stack. So I would be very appreciating if you look at the stack carefully, how it is growing and now how it will start shrinking. So we are moving in depth. That is why this traversal is called depth first search. We are moving, and kindly monitor the discovery and finishing time because it has a very important application जो मैं अभी बताऊंगा आपको. So after C, what happens? C is my current exploring node. So we process the information of C. Now C, as per the graph, look here, has been generated from G. G is the parent. So its children are F and A. F and A. But A is already generated. We don't generate again. We don't visit again. So उसका और एक child कौन सा रहा? F. So F has not been visited. We visit F. We visit F. So F, this is the first visit. F will become the next exploring node. So this we remove, right? And push C onto the stack. Push C onto the stack. So F is processed. F has not been processed earlier. F is processed. Ab now, bachcho, be careful. So after F, F has been generated from C. We'll now try to generate H. H is already visited, so we don't visit, right? G has two children. G has only one child, please. Where are the two children? G is generated from H. G is generated from H. So G has only one child. C. Look at that. Where is the link from G to F? There is no link from G to F. Kindly observe. Shifu Hadir. F is not any child of G. I hope you are following. ठीक है. चलिए F. Now here comes. So I will mark the discovery time of F as 7. 7. Now observe. F generated from C. The only child of F as per the graph is H. Is H. But H is already visited. We don't visit again. So eventually now for the first time, node F has become dead. Node F has become dead. अभी तक dead node का कोई concept नहीं आया था. अब आ रहा है पहली बार. F has become dead. F has no more children to continue. So therefore, when the node become dead, we will mark the finishing time of node F. We will mark the finishing time of node F as any value greater than 7. That is 8, 9, 10. कुछ भी mark कर सकते हो आप. I will mark 8. जब node dead हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? We will pop the top of the stack. जो भी node होगी top live node top of the stack पे, और वो बन जाएगी next E node, next exploring node. तो कौन है top of the stack? C है. So we are going to pop C from the stack. We are going to pop C from the stack. ठीक है? So C will become the next exploring node. C ने पहले generate किया था child F, और A तो already generated था. So C also has no more children left over. So C also become dead. C also become dead eventually. So when C become dead, we have to mark the finishing time for C. We have to mark the finishing time of C. क्या होगा finishing time of C? Any value greater than 8. Any value greater than 8 will be the finishing time of C. So let us say 9. We are moving exactly in sequence. हालांकि वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सिर्फ order आपको maintain करना है. That's it.
order is maintained. Any value greater than 8, last value जो था हमारा 8, any value greater than, be careful, not 7, right. फिर उसके बाद क्या होगा, G pop होगा स्टैक से, G pop होगा स्टैक से, ठीक है, we pop G from the stack. So let me cut off this. So we are going to pop G from the stack and G become the next E node. देखिए आप ग्राफ से, G has no more children left over, G has already earlier generated C and no more children left over, so eventually G also become dead. So its finishing time will be marked as 10. उसके बाद क्या होगा, importantly observe, next node to get popped from the stack is H. So we are going to pop H from the stack. H will become the next exploring node. If you remember earlier, H has generated G. Now H will try to generate F. F is already done, right? So we don't visit. Is there any more children left over for H? Yes, one more child, E is left over. So H will try to generate E. This is the first visit of E. E will become the next exploring node, pushing H onto the stack again for the second time. And greater value, last value is 10. So next its discovery time will become 11. E will become 11. We process the information of E. As per the graph, E has been generated from H. And E has one child B. Look at that. But B is already visited. तो हम visit नहीं करेंगे B को. So E will become dead. So what is the finishing time? Any value greater than 11. So therefore 12. 12 will become the finishing time of it. So फिर उसके बाद कौन है E node बनेगा? Top of the stack. पे कौन है? H है. So H will become the next exploring node again. और अब आप देखिए ग्राफ के बेसिस पर H has processed all its nodes. There are no more nodes left over for H. So therefore the finishing time of H is any value greater than 12, मतलब 13. So finishing time. उसके बाद क्या होगा? Top of the stack से pop करेंगे हम, वो है node D, right? Node D will become the next exploring node. Node D also has इसका value हम यहाँ पे change कर देंगे. Right, this was 3. So node D will become the next exploring node. And D has no more children left over. So any value greater than 13 will become the finishing time of D. So finishing time of D is 14. Take it. फिर उसके बाद क्या होगा? B is popped from the stack. B will become the next exploring node. B will try to generate E. देखिए आप पहले B ने generate किया था D को, अब E generate करने की कोशिश करेगा. There are no, E is already generated. So B also become dead. And the next highest value after 14, that is 15, will become the finishing time of B. And then finally, A will get popped from the top of the stack and become the next exploring node again. A earlier generated B will now try to generate C. C is already done. A becomes dead. And therefore the next higher value, that is 16. देखिए आप, आपके पास total 8 nodes थे. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's why the finishing discovery time starts from 1, finishing time ends with 16. क्योंकि हमने perfect sequential order follow किया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So therefore, definitely the highest finishing time will be 16. If you are getting a different value, then that means you made a mistake. So this is what I call depth first search traversal order of this graph. And this resultant structure जो आपको यहाँ पर मिला, what do you call it as? This resultant structure which you got represents what? This is a spanning tree. So this is called depth first search spanning tree that shows the discovery and finishing times. ठीक है? So this is depth first search along with the framework of discovery time, finishing time, along with the framework of E node, live node and dead node. Is it clear? Any doubt on this? If you have any question, any doubt on this, because it's very important, I'm saying. And the condition for traversal to come to a halt is that stack should become empty. Then only we say traversal will come to a halt. लेकिन ये कंडीशन है, द ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ. देखिए आप, ये ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है. एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन पेयर ऑफ वर्टिसेस. कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस अगर आप ले लो, उसमें पाथ होना चाहिए. आप कोई भी 2 वर्टेक्स ले लो, उसमें पाथ है. वी हैव अ पाथ फ्रॉम B to C, I have a path from E to G, I have a path from A to J, everywhere.
So for Varun Tatpa 3, I don't have any revision. This itself is considered as a revision course or crash course. There is no other revision course for GATE 2023. We are teaching regular batches for GATE 2024 and 25 on the PW platform app. No revision for 2023. This is the only revision which is going on. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और लेंगे नेक्स्ट सेकेंड ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट सर्च इन undirected disjoint graphs. Disjoint graphs. When do you say graph is disjoint? Come on. When do you say graph is disjoint? What is the other name of disjoint? The other name of disjoint is disconnected. When do you say graph is disjoint? Come on, write down in the chat box and let me know, please. When do you say an undirected graph is disjoint or disconnected? If there is, come on, yeah, disconnected, very correct. But when do you say graph is disjoint or disconnected? Not k is greater than or equal to 2. No, Bhagwa, it is not correct. No cycle. Nahi. There are two components. Okay. You are trying to say in that dimension, then it is right. Like for example, a 1, 2, 3, 4, right? 5, 6, 7. Maybe 8, 9, 10, 11, 12. We'll take a graph something like this. This is an disjoint graph. Having how many components? Come on. How many components are there in this graph? There are 3 components. Very correct. There are 3 components. So a graph is said to be, undirected graph is said to be disjoint if, for example, has at least 2 or more components. Correct. या म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वेरी करेक्ट. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिलॉसफी आप बोलेंगे. यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट आपको मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा. इसे मैं थोड़ा रिड्यूस कर लूंगा, श्रिंक कर लूंगा, सो दैट यू कैन परफॉर्म द ट्रैवर्सल हियर. सी ऑन बोर्ड. द ओनली थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट टर्मिनोलॉजी के परस्पेक्टिव से डेप्थ फर्स्ट सर्च व्हेन परफॉर्म्ड ऑन undirected disjoint graphs is known as DFT. ये एक टर्म है, आपको याद रखना है. इसका मतलब है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल. इट इज नॉट डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, DFT. ये एक टर्मिनोलॉजी है, प्लीज रिमेंबर. Depth first search when performed on undirected disjoint graphs, it's called DFT. Why is it called DFT? Because it will lead to multiple spanning trees, which is called depth first search spanning forest, जो अभी मैं बताऊंगा आपको. चलिए मैं स्टार्ट करूंगा quickly. When performing depth first search on this, now I will directly go for discovery and finishing times on my own. Please follow me carefully and check the result. I'm starting from any vertex I can start. I can start from any component, any vertex. I'm starting from 1. Discovery time 1, I come to 4, discovery time 2, I go to 3, discovery time 3, I go to 2, discovery time 4. Now finishing time, because there are no outbound edges, so 5, 6, 7, 8. ये component हो गया. अब क्या करेंगे हम? I can start the traversal, I can continue, not resume or restart. I will continue my traversal from any of the remaining unvisited vertices. अब कोई भी unvisited vertices से मैं अपना ट्रैवर्सल कंटिन्यू करूंगा. ठीक है, मैं चाहे तो 5 से कंटिन्यू करूंगा, 6 से कंटिन्यू करूंगा, 7 से करूंगा, या 8 से भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं. लेट अस से वी स्टार्ट विथ 5. सो इसकी डिस्कवरी टाइम क्या होगी, कोई मुझे लिख के बताएगा? See here in this sequence, what will be the discovery time of vertex 5? Come on, boys and girls. What will be the discovery time of vertex 5?
Let me see who will answer. In the current scenario, what will be the discovery time of vertex 5? You have to tell me the answer. Yes, Bhagwash, Sweta. Any value, you should say like this, not value like that. 9 हो सकती है, आप बता रहे हैं, सो बराबर है. हम ऐसे बोलेंगे, देखिए हाईएस्ट वैल्यू जो अब तक फिनिशिंग और डिस्कवरी जो आया था वो 8 था, तो हम बोलेंगे एनी वैल्यू ग्रेटर देन 8. हाँ, मिनिमम अगर आप मैं पूछा तो 9, तो लेकिन सही जवाब है एनी वैल्यू ग्रेटर देन 8. एनी वैल्यू ग्रेटर देन 8, करेक्ट. So I will take 9 as you said. So 9. Then from 5 I can come to 7. Discovery time 10. From 7 I can come to 6. Discovery time 11. Then होगा ये 12. Then ये होगा 13. 13. फिर ये होगा 14. ठीक है. फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ट्रैवर्सल 8. तो डिस्कवरी टाइम बन जाएगा इसका 15. तो 8 के बाद हम 9 को जाएंगे, लेट अस से 16. 9 से हम आएंगे 11 पर परहैप्स, तो ये बन जाएगा 17. 11 से हम आएंगे 12 पर 18. 12 से हम जाएंगे 10 पर, ये हो जाएगा 19. फिर उसके बाद ये 20, 21, 22, 23, 24. देखिए आप टोटल वर्टिसेस कितने हैं. 4 + 3 7, 7 + 5 12. दैट इज वाई इट इज एंडिंग स्टार्टिंग विथ 1 एंड एंडिंग विथ 24. परफेक्टली करेक्ट. Yes. Can a node be pushed onto stack more than once? 100%. Why not? Satyam Binayak. Definitely it can be pushed onto the stack multiple times. It has to get pushed onto the stack क्योंकि depth first search है. जरूर push होगा. आपने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा होगा. Multiple time we pushed. Multiple time we pushed. So this is the traversal. हाँ बच्चों, यहां पर यह बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं. This is one spanning tree. This is another spanning tree for the second component. This spanning tree for third component, right? So this is called, what do you call generally a set of trees. आपने पढ़ा है data structure में, a set of trees is called forest. So that is why this whole structure now is called depth first search spanning forest. Collection of trees is called forest. तो हम इसे बोलेंगे depth first search spanning forest. तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि DFT will always produce a spanning forest when I have multiple components of undirected graph. ये है DFT and DFS, ये डिफरेंस है. DFT will produce depth first search spanning forest, right? This is the concept. I hope this concept is clear. यहां पर इमीडिएटली मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा. आप ये सोच रहे होंगे कि सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डिस्कवरी एंड फिनिशिंग टाइम. एक गेट पीवाईक्यू ले लूंगा जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस गेट क्वेश्चन में, बेस्ड एग्जैक्टली ऑन डिस्कवरी एंड फिनिशिंग टाइम. देखें आप कर पाते हो या नहीं. आई विल डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन. कम ऑन, आंसर दिस क्वेश्चन. लेट मी सी हु विल आंसर. कम ऑन, टेक इट एज अ चैलेंज, बॉयज एंड गर्ल्स. आंसर दिस क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू based on discovery and finishing time and depth first search. Consider the depth first search of an undirected graph with 3 vertices PQR. Let discovery time D of U represent the time instant when the vertex U is first visited, and finishing time represent the time instant when the vertex U is last visited. The discovery times of the 3 vertices are given, finishing times are given. You need to answer the questions among A, B, C. Let me see who will answer. See, Satyam Binayak, I told very clear. The traversal will come to a halt and when the stack become empty if the graph is connected. If the graph is not connected, D of T, then that is not the condition for the traversal to come to a halt. The condition would become that all nodes should have been visited. When the graph is disconnected or disjoint, the condition is not stack emptiness. The condition is all nodes should have been visited. Okay. What is the answer for this question? This is a previous year question, please. Okay, very good. P and Q are connected. Okay. So देखेंगे आंसर इसका. We will try to work out the question here. Discovery time of P, देखिए आप कैसे, it is not following in proper order.
Discovery time, if I put two vertices PQ and R, something like this, or I will put R here. We'll mark discovery and finishing time like this. Discovery time of P is 5. Finishing time of P is 12. Discovery time of Q is 6. Finishing time is 10. Discovery time of Q, R, sorry, this is Q. Q is here. So 6 and 2 are 10. And this is 14 and 18. So one of the important application of discovery and finishing time is that it will help us to know the topology of the graph. It will help us to know the topology of the graph. That is the concept of this. So when I'm starting from P is the lowest value, 5. So we are starting the traversal from P. After 5, what is the next higher value? 6. That is discovery. That means we are going from P to Q. 6 के बाद next higher value क्या है? 10. That is finishing time. तो मतलब यहाँ से हम कहीं और दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं from Q. And then I come here, highest value after 10 is 12. So that means these two are connected. 10, 12 के बाद ही ये 14 process हो रही है, 18 है. तो मतलब the graph structure is like this. So that means this graph has got two components. This graph has got two components. There are two components. P and Q are connected. So those who said answer as D, you are right. Congratulations to those who said D. And I think almost everybody has said D. So this is the type of problem which can be expected on discovery and finishing times. And moreover than that, I can tell you that there are many other more applications of discovery and finishing times. हम देखेंगे बाद में if time permits. There are variety of other applications of discovery and finishing times other than what I have told. I can formulate another simple question on this. I will give you like this. Let us take another case. See on board. Let the graph has 4 vertices. PQRS. Okay? And here in the options A, B, C, some option. These not multiple choice exactly. I am providing the discovery and finishing time intervals, right, of vertex P here, vertex P, vertex Q, vertex R, vertex S. This is 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15 and 18. Go and answer this. What do you think should be the question? यहां पर मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं. What do you think should be the question that I should ask you? Answer the question. चलिए ऐसे बोलेंगे आप. Answer the question. जो क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाह रहा हूं वो क्या है? Yes. Pritam Swain, Bhagwa, you are right. You need to tell whether the graph with 4 vertices, is it connected or not? First question. अगर connected हो तो कोई problem नहीं है. अगर then if it is not connected, if the graph is not connected, then how many components does the graph has? Come on, tell me. These are discovery and finishing times. These are the discovery and finishing times of the 4 vertices. So you have to tell the answer in terms of all these ABC. For ABC you have to tell. It is not a multiple choice question. For option A you have to tell is the graph connected or not connected. Option B you have to tell connected or not connected. और उसके बाद आपको बताना होगा अगर connected ना हो तो कितने components है ग्राफ में. चलिए जल्दी वर्कआउट करके बता दीजिए ऑप्शन ABC के लिए. Come on boys and girls, please work out. Workout. It's interesting. This is what I was saying, applications of discovery and finishing time.
This is what I was saying about application of discovery and finishing time. For one, two components, very correct. Very good. Logical learner. Be careful with the option C. 2 to 4 components. Be careful with option C. Bhagwa. Mac. Be careful with option C. ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट. So I have 3, 4, 8, then 10, then 12, then 14. मतलब यहां पे we have connectivity between P, Q, R. I will put like this. This is in one component. And you can see 15 and 18. This is another component, P, Q, R, S. So therefore I have two components in the first case. Two components. Second में आ जाइए आप. Lowest value is 5, मतलब traversal यहां से start हो रहा है. So I have 5, 8, 10, 12. मतलब ये दोनों connected है. दोनों connected है. मतलब Q and R. Q and R are in one component. देखिए आप 5, 8, 10, 12. फिर उसके बाद देखिए आप 14, 15, 16, 20. मतलब P and S are in two component, are in another component, P and S. So again I have two components. Two components. अब रही बात यहां पर देखिए, lowest value is 8. I have 8 and 10. 8 and 10. So मतलब this is one alone component Q. Then 15 and 20. 15 and 20. So therefore this is another component R. Then I have 22 and 40. This is P. And then 45 and 50. Very correct. So 4 components. 4 components. That's right. 2, 2 and 4. लास्ट एग्जाम्पल यही प्रॉब्लम में लूंगा, मैं लास्ट में लिखूंगा यहां पर ऑप्शन डी. उसके लिए भी आप प्लीज वर्कआउट करके बता दीजिए. लास्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. Come on, tell me. लास्ट ऑप्शन डी. इसके लिए बताइए, कनेक्टिविटी बताइए, ग्राफ की कंपोनेंट्स बताइए. लास्ट में स्लाइटली बी केयरफुल. Three components. Shifu Khadir is saying 3 components. Bhagwa Saurav Shinde is saying 3 components. Okay, it's slightly interesting. Everybody will get confused here slightly. Prince Jaiswal is saying 2 components. Okay. Mac is saying 2 components. First of all, I would like to ask you, is the marking of discovery and finishing time correct? Is the marking of discovery and finishing time, is it correct? That's my first question. Is the marking of discovery and finishing time correct or incorrect? That is my first question. Not valid. Satyam B. Naik. Correct? That's not valid. कहां पर problem है? Come on, tell me that. Where is the problem? Where is the problem here? See, lowest value is 3.
So from 3 you are saying 8. That means from R you are going to Q. Then from 8 you are going, so from R you are coming to Q, then to P. उसके बाद देखिए आप, you cannot have 12 here, is it right? I hope you please follow. 3, that means from R you are starting, you are coming to 8, okay, this can be there, you are coming to 10, this can be there. फिर उसके बाद जो next higher value है 12, it should have been either to S or it should have been the finishing time of P, is it not? 12 cannot come here, I hope you understand. I hope you understand that 12 cannot come here. 12 has to be either here or the discovery time of vertex S. I hope you are following my point. That's the click here. So that's why we say this is invalid. Invalid traversal with respect to discovery and finishing time. It is invalid. It is not possible. So that's the clock. These aspects you have to be careful, especially in the exam. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च लेंगे. थर्ड, डेप्थ फर्स्ट सर्च इन डायरेक्टेड ग्राफ्स. डेप्थ फर्स्ट सर्च इन डायरेक्टेड ग्राफ्स. इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल एग्जांपल ले लूंगा. मेरे पास एग्जांपल है. पहले एक सिंपल ग्राफ लेंगे हम, फिर उसके बाद एक मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दूंगा मैं आपको. दिस ए बी एंड दिस इज सी, दिस इज डी. ओके, so I have connectivity like A to B, and then I have B to C, I have D to C, and A to D, and B to D, and also from C to A. This is the connectivity. ठीक है, चलिए. This is my graph P and E. तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, particularly when you have directed graph, when you perform depth first search on a directed graph, when you perform depth first search on directed graph, it will lead to 3 types of edges. Actually 4 types of edges. चलिए पहले मैं आपसे पूछ लूंगा, can you tell me what are the 4 types of edges particularly that happens? This is again a star topic. Mark it as a star topic. There were questions including in recent time, GATE 2022 or GATE 2021 में there were questions on this aspect of which I am explaining now. Come on. Depth first search when performed on a directed graph will lead to 4 types of edges. Please write down in the chat box what are the 4 types of edges. Yes, Prashant Prabhakar. Forward edge, back edge, tree edge, cross edge. Satyam Binayak, absolutely correct. Not inward, outward, Bhagwa. 4 types of edges. Here I am writing what are those four edges. The 4 edges are tree edge. Next, forward edge. Next, back edge. And next, cross edge. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज अ ट्री एज, व्हाट इज अ फॉरवर्ड, बैक एंड क्रॉस एज. तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक ए मेंशन दैट ये ग्राफ के लिए आप ट्रैवर्सल कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स ए, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स बी, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स सी और डी, एनीवेयर, एनी वर्टेक्स. दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्राफ ट्रैवर्सल. लेट अस से आई एम स्टार्टिंग माय ट्रैवर्सल फ्रॉम नोड ए, discovery time 1. And from A, if you observe, I can go to either B or I can go to D. I have options. So let's say I'm going to B. I'm going to B. Discovery time 2. From B, look at this. From B, there are 2 options. Either I can go to C or I can go to D. Right? I can go to C first, or I can go to C first, or I can go. Is there any option left over here? Is there any option left over from C? See, there is an edge to A, but A हमने already visit कर लिया. We are not going to visit again. We are not going to visit again. So from C, there is no other option going out from C, right? So therefore finishing time 4. And then I come back to B. B के पास वापिस आने के बाद क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? हाँ, मेरे पास ऑप्शन है. I can come to D. I can come to D. Discovery time will be marked as 5. 4 के बाद 5. Right? And 5D के बाद देखिए आप, I have option to C, but C is already visited, so therefore finishing time 6. फिर उसके बाद बैक हम B पे आ जाएंगे, finishing time 7. फिर बैक A पे आ जाएंगे, finishing time 8.
This is one possible, I am saying one possible depth first search, जिसकी प्रोसेसिंग सीक्वेंस है A, B, C, D, and this is the depth first search spanning tree. Yes, there is a lag, there is some problem with net connectivity, I suppose. So this is my spanning tree, depth first search spanning tree. Right? Up now I am going to teach you what is the meaning of tree edge, forward edge and backward and back edge and cross edge. So I'll mark with a different ink. Please see. Please follow me. Please follow me. अब हम क्या करेंगे? देखिए टोटल नंबर ऑफ एडजेस ये ग्राफ में कौन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और हम जितने मार्क किए हैं ड्यूरिंग ट्रैवर्सल वो है 3. तो 3 एडजेस अभी हम मार्क नहीं किए हैं ग्राफ में, वो स्पैनिंग ट्री में नहीं है वो 3 एडजेस. So those edges which are part of the spanning tree are called tree edges. So tree edges are part of depth first search spanning tree. So what are tree edges? AB, BC, BD. These are tree edges. So वो edges जो ग्राफ में हो लेकिन ट्री में ना हो, प्लीज listen to me carefully. जो edges ग्राफ में हो लेकिन ट्री में ना हो, ये ट्री में ना हो, वो एडजस को आप मार्क कीजिए एज इट इज इन द स्पैनिंग ट्री. ये स्पैनिंग ट्री में वो एडजस को आप मार्क कीजिए. देखें अब स्टार्टिंग फ्रॉम ए, आई हैव एन एज फ्रॉम ए टू डी. प्लीज बॉयज एंड गर्ल्स लुक एट दिस. आई हैव एन एज फ्रॉम ए टू डी. तो वो एड्स को हम कैसे मार्क करेंगे? डॉटेड लाइन से मार्क करेंगे टू इंडिकेट दैट दे आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री, लेकिन वो ग्राफ में है. ऐसे ये एक होगा एड्ज. और कौन से एड्ज है? सी टू ए एक एड्ज है. सी टू ए यहां पे ऐसा मार्क कर लेंगे हम. C2A डॉटेड लाइन से मार्क करेंगे C2A. और भी एक एड्ज है D2C. देखिए आप D2C एक एड्ज है, यहां पर नहीं है तो हम मार्क करेंगे D2C. ये हो गया. राइट? अब ये तीनों एडजेस 3 टाइप्स के हैं, रिमेनिंग 3 टाइप्स. व्हाट इज फॉरवर्ड एज? फॉरवर्ड एज लीड्स फ्रॉम ए नोड to its descendant. फॉरवर्ड, इसीलिए इसका नाम फॉरवर्ड है. देखिए दिस एज इज फॉरवर्ड एज. दिस एज इज फॉरवर्ड. Why? It is leading from node A to its descendant. The child of A is B, the child of B is D, D is the grandchild of A. That's why this edge is called forward edge. This is called forward edge. वैसे ही back edge is, it leads from a node to its ancestor. That is called back edge. देखिए C का पेरेंट है B, B का पेरेंट है A, so A is the ancestor of C. ठीक है? So C से A जो कनेक्टिविटी हो रही है वो एज को हम बोलेंगे बैक. इट इज बैक एज. ठीक है? So CA is a back edge. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है जो बच्चे गलती करते हैं, वो ये है द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड, बैक एंड क्रॉस इज ओनली इन द स्पैनिंग ट्री, इट इज नॉट इन द ग्राफ. वरना आप ग्राफ में बोलेंगे A to D, फॉर एग्जाम्पल A to D, D is a child of A ग्राफ में, but D is not the child of A in the spanning tree. So these definitions apply only in spanning tree, not in the graph. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना आप पूरा मिक्सअप कर दोगे. Again I am telling, these definitions of forward, back and cross will apply only in the tree but not in the graph. ग्राफ में totally wrong हो जाएगा. ठीक है? Only in the tree. चलिए क्रॉस क्या है? Lead from a node lead from a node to another node which is neither its ancestor nor its descendant. मतलब अब ये देखिए आप, D और C जो है they are siblings. D is neither ancestor of C, C is neither descendant of D, right? Then such an edge present between them is called cross. अब यहां बोलेंगे सर आपने तो अपने खुद ही से एक परफॉर्म किया ट्रैवर्सल, क्या हम कोई और तरीके से भी ट्रैवर्सल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. अगर आप करेंगे ट्रैवर्सल उस तरीके से, आप अपने तरीके से, देन आई कैन हैव डिफरेंट सिनेरियोस फॉर ट्री एज, बैक एज, आई मीन फॉरवर्ड एज, बैक एज एंड क्रॉस एज. चलिए और एक एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा, प्लीज फॉलो फॉर द सेम ग्राफ. एक ट्रैवर्सल हम दूसरे तरीके से, दूसरे
वर्टेक्स से करेंगे। मैं थोड़ा इसको स्क्वीज कर लूं so that I can create some space for performing traversal। आप बोलेंगे सर वी विल परफॉर्म ट्रैवर्सल इन डिफरेंट वे। हाँ चलिए स्टार्ट करेंगे। सेम ग्राफ के लिए इफ आई स्टार्ट द ट्रैवर्सल फ्रॉम वर्टेक्स बी, प्लीज ऑब्जर्व आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बी, डिस्कवरी टाइम 1। बी के बाद आई हैव टू गो टू आई अदर ऑप्शन डी और सी। मान लीजिए वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू सी, डिस्कवरी टाइम 2। सी के बाद क्या ऑप्शंस है? कंपल्सरी हैव टू विजिट ए, सो आई एम विजिटिंग ए। ए के बाद क्या ऑप्शन है? आई हैव टू विजिट डी, सो आई हैव टू विजिट डी। ये हो गया ट्रैवर्सल। सो डिस्कवरी टाइम 3, डिस्कवरी टाइम 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया मेरा स्पैनिंग ट्री। दिस इज माय स्पैनिंग ट्री। In this spanning tree, you are going to mark those edges which are there in the graph but not in spanning tree. चलिए आ जाएं कौन से edges है? I have C to A, I have C to A already present, A to D, A to D also present, D to C। हाँ देखिए D to C नहीं है तो हम मार्क कर रहे हैं edge D to C ब्रोकन लाइन से। चलिए और कौन सा edge है? B to D, B to D भी एक है, नहीं है, we are marking it। 3 edges होंगे B to D। फिर और कौन सा होगा? C to A, C to A is done, B to C। Just a second, sometime this create a problem। Okay, we are back। तो देखिए और एक just a second। Okay, so what is other edge which is missing in my spanning tree? What is other edge which is missing in the spanning tree? Come on, let me know। C to A is there, from A we will check out, from A we will check out। Anything from A to D? A to D is over। A to B, A to B is missing, so I will mark A to B। चलिए हो गए। अब आप मुझे बोलिए, दिस इज हाउ द गेट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, दिस इज हाउ द गेट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। यू विल हैव टू टेल which edge is this, forward, back or cross, which edge is this, forward, back or cross, which edge is this, forward, back or cross। Let me write it here। I have A to B, classify this edge। I have B to D, classify this edge। And I have D to C, classify this edge। Come on, this is the gate question, this is the potential question। What about uniqueness of the graph? I never said Bhagwa, I said that graph traversal is never unique। मैंने पहले ही कहा आपको graph traversal is not unique। I can have multiple graph traversals, multiple depth first search, that's what I am showing you। Yes, A to B is what? A to B, come on, A to B is back, very correct। B to D is what? B to D, this is forward। D to C, come on, what is D to C? Back, there is no cross now। I hope you are able to understand, there is no cross now। उसी तरह आप ट्रैवर्सल C से स्टार्ट कर सकते हो, D से स्टार्ट कर सकते हो, और आप मार्क करेंगे बैक एज, क्रॉस एज एंड ट्री एज एंड क्रॉस एज। So this is the concept of this BD forward। D to C are siblings। Now please observe D to C, C is generating A is generating D, please observe, C is generating A is generating D। So A is the child of C, D is the grandchild of C, so I have a link from D to C, D to C is back। समझ गए? समझ गया? बी केयरफुल। अब इसके बाद एक मैं पोटेंशियल गेट क्वेश्चन दूंगा मैं आपको एक बड़ी ग्राफ से, ठीक है? बी रेडी टू आंसर। मैं एक्चुअली नहीं लाया यहां पर, अब यहां पे आपको दे दूंगा, डोंट वरी। स्लाइटली बिगर ग्राफ, I will take a slightly bigger graph for you and you are going to work out this problem। Come on, be ready boys and girls and try to work out this problem। Let me see how many of you will work out correctly। This is B, this is A, bigger directed graph, this is C, E, F and D, and here I have G
चलिए, दिस इज द ग्राफ, मेक ए नोट ऑफ इट, दिस इज माय डायरेक्टेड ग्राफ। आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, राइट? यहां पर मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन, प्लीज ऑब्जर्व। चलिए, दिस इज माय क्वेश्चन, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन इज दिस, गौर से सुनिए मेरा क्वेश्चन, डोंट बी इन हरी, डोंट गेट पैनिक, कंफर्टेबली सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, for this given directed graph, please verify and tell, is this a valid depth first search traversal order? Come on, answer this. You have to say yes or no, that's it. उसके बाद फिर मेरा next important question आएगा. Come on. Is this a valid depth first search traversal order of the given graph? Say yes or no. Come on. Is this a valid depth first search traversal order of the given graph or not? Yes. Valid. ठीक है? Yes. Many people are saying, I also agree with you. So answer for the first question is very correct. And with respect to discovery and finishing time, it is definitely a valid traversal order. अब मुझे बताइए क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन, which I said is the most important potential gate question. Potential gate question क्या होना चाहिए? As a multiple choice question, what should be the question? Come on, answer the question again. Answer the question. क्वेश्चन क्या बनना चाहिए बेसिस पर? चलिए, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव होगा आपका। क्या क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए यहां पर? एज मीनिंग हाउ मेनी इन दिस स्पैनिंग ट्री, अगेन व्हेन दिस इज अ वैलिड डेप्थ फर्स्ट सर्च स्पैनिंग ट्री, हाउ मेनी फॉरवर्ड एडजेस, हाउ मेनी बैक एडजेस एंड हाउ मेनी क्रॉस एडजेस आर देयर? दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर 2 marks. How many against this graph and in respect of this spanning tree, how many forward, back and cross edges are there is the potential gate question for 2 marks. Come on, work out and tell. Yes, number of all different edges, correct. That's a potential question. इस तरीके से आएगा question. Come on. Mark it and prove, that's it. अगर थोड़ा मिस्टेक करेंगे आप तो गलत हो जाएगा. Be careful. मार्क दी एडजेस, पहले मार्क कर लीजिए, फिर उसके बाद क्लासिफाई कर लीजिए. First mark the edges and then classify.
5 forward, oh my god. मोहम्मद आसिफ, दैट्स व्हाट आई सेड, पीपल इफ अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो गलत कर देंगे क्वेश्चन. So first you have to decide what are the edges which are to be marked. Satyam B. Naik, only one forward, two back, okay. One forward and two back you are saying. Very good. टोटल कितने एडजस्ट मार्क करने होंगे ये पहले ये डिसाइड कर लीजिए. हाउ मेनी एडजस्ट आर टू बी मार्क, फर्स्ट यू डिसाइड दैट. First you decide that total how many edges are to be marked, MAR 6, that is correct. अब वो 6 edges आप बताइए कौन से है. लॉजिकल लर्नर, यू आर सेइंग 1 फॉरवर्ड, 2 क्रॉस, 2 बैक, तो मतलब 5 ही हुए लॉजिकल लर्नर और एक बाकी है. कौन सा है वो? So let us mark those 6 edges first. What are the 6 edges? Starting from A, look at that. I have A to F, A to B is done, A to F, A to F, A to F. तो पहले हम A to F मार्क कर लेंगे. A to F मार्क हो गया. चलिए फिर A to C है, A to C भी कवर्ड हो गया. फिर और कोई A से बाकी है क्या? नहीं है, A से बाकी और कोई भी नहीं है. ठीक है, B पे आ जाइए. B से E है कनेक्टिविटी ऑलरेडी देयर. B से और कोई है क्या कनेक्टिविटी? नहीं है. C पे आ जाइए. C to D कनेक्टिविटी है, श्योर. हाँ, C पे C to D हो गया. फिर उसके बाद D पे आ जाइए. D to A I have from D to A, D to A, D to A. ठीक है, D to A is done. D के बाद और कोई है? D to H, D to H is there, D to H. चलिए D हो गया. E पे आ जाइए आप. E to G is E to G, E to G is not there, so I have to mark E to G. E to G भी मार्क हो गया. Then E to F is already there in the connectivity. E to H, E to H is also there, connectivity हो गया E से. F पे आ जाइए. F to B I have, F to B I have to mark, F to B, F to B. चलिए F to B भी हो गया. F के बाद और कोई है क्या भाई? F to G, F to G कनेक्टिविटी है. That's it, that is from F. फिर G पे आ जाइए. G से देखिए आप कोई भी आउटबाउंड एडजस्ट नहीं है. G से कोई आउटबाउंड एडजस्ट नहीं है, so we don't have any connectivity from G. Then H है. H to G I have, H to G, H to G I have connectivity. H to G देखिए आप. That's it. From H I don't have anything else. That's all. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So finally what is the answer? 2 each. That's it. The answer for this is 2 each. So this is cross, this is cross, this is back, this is forward, and this is back, and this is back. Sorry, this is forward. So forward, forward, back, back, cross, cross. That's all. These are the type of problem which you can expect on this. Which you can expect on this. Right? This is depth first search. 3 depth first search I have explained to you. Depth first search on directed, undirected connected graph, undirected disconnected graph, and directed graphs. अब last जो aspect है that we have to look upon is depth first search. मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन वो. Last 4th form, depth first search in DAG. What is DAG? Directed acyclic graphs. इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये भी बहुत क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट, विच वी विल ट्राई टू कवर अप एंड देन वी शुड क्लोज द सेशन. तो बताइए प्लीज, व्हाट इज the characteristic of depth first search on directed acyclic graph? It leads to one important aspect. You have to tell me what is that. What is the characteristic of depth first search in directed acyclic graph? I am taking an example of directed acyclic graph here. ये एग्जाम्पल लूंगा मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बी अश्योर्ड दैट दिस इज
a DAG. This is DAG. DAG. Directed acyclic graph. Yeah. Depth first search has a characteristic that when you perform depth first search on directed acyclic graph, it will lead to producing what is called topological sort. What is topological sort? Topological sort is a linear order specifying the order in which the vertices can be visited, maintaining their precedences. तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट पता हो. क्या मुझे आप इस ग्राफ के टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग्स बताओगे? कितने ऑर्डरिंग्स है? कम ऑन, जस्ट वर्कआउट एंड टेल. Work out for this graph and tell how many topological orderings does this graph has. Let me see how many of you are knowledgeable. Come on. This graph has got how many topological orderings? इसी तरह गेट के क्वेश्चन आए हैं. मेरे पास लिस्ट में भी है क्वेश्चन. शायद आज ना हो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा वो क्वेश्चंस कैसे आए हैं ऑन टोपोलॉजिकल सॉर्ट. कम ऑन. What are the topological orderings of this graph? How many are there? Write down how many are there. A simple practicing example. Come on. Sritam, Satyam. Topological order means you have to start from that vertex which does not have any incoming edge. Does not have any incoming edge. A has an incoming edge. It has a precedence from B. C has a precedence from A and precedence from D. D has a precedence from B. B does not have any precedence. Means topological sort will start from vertex B. From vertex B, right? So some people are saying 4, some people are saying 6. So let us see how many are there. So I can start from B. B has no precedence. After B, I have options. Either I can go to A or I can go to D. I have options. I can go to either A or I can go to D. Because A process करने के लिए you should complete B, and D process करने के लिए you should complete B. So I have completed B, therefore I can go to A or D. After A, what is option? Come on, after A, what is option? यहां पर बोलिए आफ्टर ए व्हाट इज ऑप्शन. देखिए आप, आफ्टर ए इज डन, आई कैनॉट कम टू सी. क्यों? क्योंकि सी को प्रोसेस करने के लिए, दैट इज रॉन्ग. शिफू कादिर, प्लीज ऑब्जर्व. सी को प्रोसेस करने के लिए यू शुड नॉट ओनली कंप्लीट ए बट ऑल्सो कंप्लीट डी. बॉयज एंड गर्ल, यहां पर एक मिस्टेक करते हो बच्चे. सी को प्रोसेस करने के लिए आई शुड कंप्लीट ए एंड आई शुड कंप्लीट डी. बोथ शुड बी कंप्लीटेड, देन ओनली आई कंप्लीट सी. तो मतलब ए के बाद आपको प्रोसेस करना होगा कंपल्सरी डी, और डी के बाद आपको कंपल्सरी प्रोसेस करना होगा ए. समझ गए बात को? बी ए, देन डी, then BD, then A. Then after that you can process C in both. You can process C. So one sequence is BADC, other is BDAC. फिर C के बाद आप ये sequence में either you can process E or I can process F. So either I can process E or I can process F. E के बाद आप process करेंगे F, F के बाद आप process करेंगे E. This first topological order, the second topological order. यहाँ पर भी C के बाद यह है option, you can go for E and then F, option 3. यहाँ F करोगे then E, option 4. So therefore, as many people have said, this has got 4 topological orderings, linear orders. Generally activity diagram के लिए भी बोलते हैं हम, right? The order in which the activities can be carried out. Topological sort indicate the order in which the activities of a particular task can be carried out. तो सबसे पहले जो एक्टिविटी स्टार्ट करोगे वो आप बी है, देन ए है, देन डी है, और मे बी लाइक दैट अदर. तो ये जो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग्स है, वी कैन गेट इट थ्रू डेप्थ फर्स्ट सर्च. कैसे? ऐसे. यू कैन बेसिकली परफॉर्म ए डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ दिस ग्राफ. यू कैन परफॉर्म ए डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ ए ग्राफ, एंड हियर कम्स अगेन द एप्लीकेशन ऑफ डिस्कवरी एंड फिनिशिंग टाइम. देखिए आप, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग के लिए कंपल्सरी आपको डिस्कवरी एंड फिनिशिंग टाइम चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे. दैट इज व्हाई आई से डिस्कवरी टाइम एंड फिनिशिंग टाइम कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट. तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजिकल डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ दिस ग्राफ. विल परफॉर्म डेप्थ फर्स्ट सर्च. सी ऑन बोर्ड. I can start depth first search from any vertex. I can start from any vertex. So I will start from vertex, for example, B. Discovery time 1. B के बाद मैं चाहे तो D पे जा सकता हूं या A पे जा सकता हूं. Let us say I am going to D. Any vertex we can visit. 2. D के बाद कंपल्सरी आपको विजिट करनी होगी C. Right? Discovery time 3. C के बाद आपके पास ऑप्शन है, either you can go to E or you can go to F. Let us say I'm going to E.
ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है प्लीज, नॉट टोपोलॉजिकल सॉर्ट, डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म कर रहा हूं मैं। 4 ई के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, फिनिशिंग टाइम 5, राइट। बैक सी पे आ जाइए, सी के बाद नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है एफ, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है प्लीज, आई एम रिपीटेडली रिमाइंडिंग यू दिस डेप्थ फर्स्ट सर्च इज एफ। तो फिनिश डिस्कवरी टाइम होगा इसका 6, फिनिशिंग टाइम होगा 7, बैक टू सी इसका फिनिशिंग टाइम होगा 8, बैक टू डी इसका फिनिशिंग टाइम होगा 9, राइट। फिर बैक टू बी, बी के बाद क्या है, ए पे जाएंगे आप, ए, क्योंकि एज है यहां पर ए, सो देयरफॉर दिस फिनिशिंग डिस्कवरी टाइम 10, फिनिशिंग टाइम 11, फिर उसके बाद बी पे आ जाएंगे, फिनिशिंग टाइम 12। ये मेरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च, दिस इज माय डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। दिस माय डेप्थ फर्स्ट सर्च स्पैनिंग ट्री और स्पैनिंग फॉरेस्ट बोलिए आप, डेप्थ फर्स्ट सर्च स्पैनिंग ट्री और स्पैनिंग फॉरेस्ट, यहां पर स्पैनिंग ट्री हो रहा है। डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म करने के बाद what we have to do is, here I'm writing, please observe what you have to do to get topological sort, to get topo sort, what you have to do is arrange, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपके कमेंट के लिए, arrange the nodes in decreasing order of finishing times, decreasing order of finishing times, this is topological sort। तो अब देखिए आप, ये नोड्स, जो नोड्स हमने किए, वी गॉट द नोड्स इन द ट्रैवर्सल, यू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिनिशिंग टाइम। सबसे बड़ा जो फिनिशिंग टाइम है 12 है, वो किस कौन से नोड का है, बी है। फिर उसके बाद देखिए आप, ए है 11, ए, फिर 11 के बाद सबसे नेक्स्ट हाईएस्ट फिनिशिंग टाइम क्या है, 9 है, वो कौन सी नोड का है, डी है। डी के बाद नेक्स्ट 9 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट फिनिशिंग टाइम 8 है, वो कौन सी नोड का है, सी है। 8 के बाद कौन सा है, 7 है, एफ। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट है ई। तो इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज वन ऑफ द टोपोलॉजिकल सॉर्ट, यहां पर बी ए डी सी एफ ई, बी ए डी सी एफ ई। ये तो आप पूछोगे सर व्हाट अबाउट अदर्स, यहां पर और भी है। उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बेसिकली परफॉर्म डेप्थ फर्स्ट सर्च फ्रॉम एनी अदर नोड। हमने यहां पे बी से स्टार्ट किया, आप एफ से स्टार्ट कीजिए, आप ई से स्टार्ट कीजिए, आप सी से स्टार्ट कीजिए, ए से स्टार्ट कीजिए, you can get another topological sort. So this is another application of depth first search in directed acyclic graph. When you perform depth first search on DAG, it will lead to you a topological sort sequence, where I am clearly showing the application of finishing time and discovery time. अगर आप discovery time, finishing time का concept अगर ना हो, तो आप topological sort नहीं कर सकते, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके और भी एप्लीकेशंस है, चूंकि क्रैश कोर्स है, मैं वो पूरे आपको नहीं बताऊंगा, दैट वी विल डिस्कस इन दी रेगुलर बैच वेयर वी हैव कन्वीनियंट टाइम। सो देयर आर मेनी अदर एप्लीकेशंस। और एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड पैरेंथेसाइजेशन थ्योरम, सो दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट डिस्कवरी एंड फिनिशिंग टाइम्स, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं एक और चीज बची है, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च विच आई कॉल इट एज कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी जब हम देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको फिर कंटिन्यू करूंगा हीप एल्गोरिथम से, ठीक है। तो पहले मैं लेफ्ट ओवर, आज का जो लेफ्ट ओवर है वो देखूंगा, वो बताऊंगा, राइट, वो बताऊंगा। फिर उसके बाद हम हीप एल्गोरिथम देखेंगे एंड दैट विल कवर अप द कोर्स। सी भगवा, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, या हीपिफाई एल्गोरिथम्स, हीप एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हम देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। Topological means a linear order. So that is what I wanted to tell you. Topological sort. The order in which the activities of the task should be carried out. वो मतलब है topological. So that is what from my side for today's session. Thank you very much for attending the session and participating here. So we'll continue the next class. Take care, practice and continue your hard work. Okay. Thank you very much.